होता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, एंड वन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है. सो इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. current conductor. तो इसमें करंट ऑलरेडी होता है कंडक्टर के अंदर, हम करंट को इंड्यूस नहीं कर रहे हैं. Okay. लेफ्ट हैंड रूल में वी हैव ऑलवेज करंट इन द कंडक्टर. So we have a current carrying coil or a conductor, you can write, and this conductor is placed in a magnetic field, ठीक है. So when a current carrying conductor, it carries current already, it is placed in a magnetic field, then force is exerted on the conductor, ठीक है. Yes, ma'am. मतलब किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे सपोज आई हैव अ कॉइल, ठीक है, एंड दिस कॉइल कैरीज करंट, ठीक है, and we have placed this coil in a magnetic field, then this coil will experience force, ठीक है. Okay. And we know the direction of magnetic field, it is from north to south. We know the direction of current here. At this end you can see it is going in upward direction, and this side of plate it is going in downward direction. So we can apply Fleming's left hand rule, ठीक है, left hand rule, to determine the direction of force. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, और हम सिर्फ, क्योंकि करंट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो दिस करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. इसका अपना भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना. Yes, ma'am. जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ, जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा, तो वी हैव टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स हियर, ठीक है. तो हमें पता है ना, जब दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक फोर्स एक्सर्ट होता है, Yes, राइट. ma'am. तो उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं. तो फॉर दिस, फॉर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वी स्ट्रेच द फिंगर्स, ठीक है, द थंब, forefinger and the central finger of our left hand mutually perpendicular to each other. The thumb indicates the force, forefinger indicates the field, and central finger determines the direction of current. It tells us the direction of current, ठीक है. So you can place your hand right in front of this picture and you can find the direction of force, ठीक है. Force, field, current, it goes like this. This is the case of left hand rule, ठीक है. Now let's Okay. talk about Fleming's right hand rule. See, in Fleming's right hand rule, how does it work? We are doing electromagnetic induction, and in this chapter we have already discussed that whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, current is induced in it. So we are talking about the current Yes, which is ma'am. induced in the coil. So we are saying that we have a coil, it carries no current, okay, there is no battery, nothing is attached to it. We have a coil, and this coil is placed in a magnetic field, ठीक है. This coil is placed in a magnetic field, and now we are moving this coil. Coil is moved. मतलब हमने इसमें externally इसको move किया है. Okay. We are moving the coil in the magnetic field. So when we move the coil in the magnetic field, then magnetic flux linked with the coil will, Change. right, because coil is moving, and therefore magnetic flux will link with the coil will change. Change. And because of ये magnetic flux कौन सा है? Because this coil is already placed in a magnetic field, so there are number of magnetic lines of forces entering the coil, right, and leaving the coil. Yes, ma'am. So we have magnetic lines of force which enter the coil and leave the coil, right? So if we move the coil, then there will be change in the number of magnetic lines of force and hence the magnetic flux. And because of the change in magnetic flux, current will be induced in the coil.
ठीक है। Yes, ma'am. तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में we take a right hand, again we'll stretch the fingers in the same way as we do in Fleming's left hand rule. In the same way we'll be doing in right hand rule. So we stretch our thumb for forefinger and the central finger mutually perpendicular to each other. So this becomes the motion of the conductor, the force which was force earlier, now it becomes the motion of the conductor. ठीक है, so motion of the conductor, magnetic field and current. Motion, field, current. We are only, we have only replaced force. In place of force, now we are writing motion. Motion. ठीक है, so our thumb indicates the direction of motion of the conductor. Motion of the conductor, right? Yes, And ma'am. forefinger indicates the Magnetic field. magnetic field, and central finger indicates the direction of. Current. We write induced current because current is induced, right? Yes, ma'am. Induced current. So what difference do you see in both the cases? जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके अंदर कॉइल मूव नहीं कर रही है और जो राइट हैंड रूल है उसके अंदर कॉइल मूव कर रही है. हाँ, लेफ्ट हैंड रूल में कॉइल, जब ये फोर्स एक्सर्ट होता है ना, तो ये फोर्स कॉइल को मूव करवाता है. Force is exerted on the conductor. This force makes the coil move. Because of this force, coil moves. So we are, यहाँ पे we are not moving the coil externally, right? We are not applying any external force to move the coil. Coil is moving by itself. Coil is moving by itself because it is a current carrying coil. So it is moving by itself. ठीक है? Yes, ma'am. है ना? क्योंकि ये करंट कैरिंग कॉइल है तो ये अपने आप से मूव कर रही है. वी आर नॉट मूविंग इट. बट यहां पे क्या हो रहा है? वी आर मूविंग द कॉइल to change the magnetic flux because we want the magnetic flux to be changed, and therefore we are moving the coil, and because there is change in magnetic flux and hence current is induced. ठीक है, Okay. यहाँ पे कॉइल अपने आप मूव करती है क्योंकि वो उस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, और यहाँ पे हम कॉइल को मूव करते हैं. So let L be the length. See, here we are assuming that there exists no loss of energy when this conductor is moved. See, वैसे तो practically losses are always there, है ना? Due to friction, Yes, ma'am. लॉस, ये सब होते हैं. बट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, so we have this rectangular conductor, you can see it's P, let's label this P Q R S. So in this side PQ is free to move. ठीक है, it is moving in this direction with some velocity V. Please label this properly. And ma'am. मतलब ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, उसमें जो ये साइड है PQ, it can move freely. ठीक है, and it is moving in this particular direction with some velocity v. So we can consider distance this as x. ठीक है, तो अगर आप इसको मूव करोगे तो आफ्टर सम टाइम दिस PQ will cover a certain distance and reach here. Yes, ma'am. है ना? तो अब ये क्या हो रहा है, जैसे कुछ टाइम के बाद ये यहाँ आ गया. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो PQ है इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड वी कैन टेक दिस डिस्टेंस एज डेल्टा x और dx. Yes, ma'am. ठीक है, इसको हम डेल्टा x कंसिडर कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे Yes, ma'am. मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो एनक्लोज्ड है बाय द लूप,
Let's write that first. Magnetic flux enclosed by the loop is denoted by phi b, and it is equal to magnetic field intensity into area. How do we write area? We write area as B, area as length into breadth. So BL, Yes, ma'am. we can write like this. Area is Yes. L into X. And we can see here that X is changing with time, no? When Yes, ma'am. the conductor is moved, then X is changing, X is decreasing, है ना? Yes, ma'am. X is changing with time. So because X is changing, therefore area will change. Yes. तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होता है? आपने ही बताया था, है ना? कब जब चेंज? जब या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या एरिया चेंज हो। जब या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या एरिया चेंज हो, तो इसका एरिया चेंज हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स डिक्रीज हो रहा है तो एरिया भी डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर ये यहां मूव करने की बजाय उल्टी डायरेक्शन में इधर की साइड मूव करता तो एक्स का वैल्यू इंक्रीज, एरिया इंक्रीज होता है। एरिया इंक्रीज। दोनों केसेस में वी हैव चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, whether it is increasing or decreasing, it is changing, right? Yes, ma'am. ठीक है, and we can find because there is change in the area, so therefore EMF will be induced in the conductor, and we can write EMF as minus d phi by dt. ठीक है, or it can be written as minus d by dt, and this phi b magnetic flux is blx. ठीक है, so minus bl, and this, so see, magnetic field is a constant quantity. Length of the conductor is, we are not changing the length, we are not changing the magnetic field, we are only changing the x, right? Because only Yes, x is ma'am. changing, so we can move all these, variables outside the differentiation, and in the differentiation we can write just x. Okay. Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो क्या है यहाँ पे, this dx by dt, बिकॉज यहाँ पे जो आपका dx by dt है वो नेगेटिव जा रहा है। मतलब अगर हम बोलें कि दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लेंथ को अगर हम ऐसे कंसिडर करते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड टू मेजर द लेंथ, राइट? तो आपका जो वेलोसिटी है, जो मोशन है, वो उसके अपोजिट साइड में है या नहीं है? Yes, ma'am. अपोजिट है। अब जो v है वो होना क्या चाहिए? वेलोसिटी होता है कितना पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है विद टाइम। Yes, ma'am. rate of change of position with time is velocity, but यहाँ पे बिकॉज हमारा dx डिक्रीज हो रहा है ना, तो वी कैन राइट माइनस बी एल, एंड फॉर dx by dt we are going to write minus v. Yes. Okay, so minus minus plus, so it's plus blv. So this is the formula for induced EMF when a conductor moves in a magnetic field. So this is motional EMF, we can say motional EMF. Yeah. ठीक है, motional EMF, because when a conductor moves in a magnetic field, then EMF is induced, and we write the EMF as this. Okay, L is the length of the conductor, B is the magnetic field in which it is placed, and V is the velocity with which it is moving. Clear? Easy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। Sorry. This is a magnetic field, ठीक है, and we have a conductor placed here in the magnetic field. तो यहाँ पे look at this conductor. This conductor is partially in the magnetic field, and some part of the conductor is not in the magnetic field, right?
Yes, ma'am. So if I move this conductor away from the magnetic field with some velocity v, then the part of the conductor which is in the magnetic field, the length of the conductor which is in the magnetic field will change. Yes, ma'am. है ना? अगर ये कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ जाता है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो Yes, इसका ma'am. जो पोर्शन, जो एरिया जो इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो एरिया डिक्रीज हो रहा है, राइट? ठीक है, सो Yes, लेट ma'am. साइड, लेट दिस बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सी दिस, वी हैव टू डायमेंशनल कंडक्टर, ये रेक्टेंगुलर है, राइट? सो एल इज नॉट चेंजिंग, this part of this length is decreasing, na? Yes, ma'am. If I consider this part as x, so after some time when it moves towards, when it moves away from the magnetic field, so delta x by delta x length will be reduced by delta x. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो उसकी विड्थ है उसको लेंथ ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, विड्थ एल है, और जो उसकी लेंथ होती है जो ये वाली है, उसमें जो पार्ट है जो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है वो एक्स है, और जब उसको आप मूव कर रहे हो तो डेल्टा एक्स की बाहर निकला। ठीक है, तो डेल्टा एक्स उसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गया। Yes, ma'am. इनिशियली जो एरिया था उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में उसके, वो क्या था, एल एक्स। ठीक है, और ये एरिया कितना Yes, ma'am. रिड्यूस होगा, एरिया रिड्यूस होगा बाय एल डेल्टा एक्स, Yes. Delta X. है ना, ये जो पोर्शन है एट अ पॉइंट ऑफ Ah, टाइम, yes, है ना? And because of this change in area, EMF will be induced in this conductor. And हमें कैसे पता कि इसमें करंट इंड्यूस हुआ है? We can place a galvanometer here. ठीक है? We can place a galvanometer here and galvanometer detects the feeble electric current. ma'am. So we can see the deflection in the galvanometer when it is moved. Yes, ma'am. ठीक है? तो अब यहाँ पे this is the decrease in area. So what is magnetic flux? Magnetic flux is B Dot A. and decrease in area. Decrease in area, we can write minus L delta X because area is decreasing. Yes, ma'am. Again, because we write EMF as minus d5B by dt. So therefore, minus d by dt, and in place of phi b, we can write minus L delta X. So minus minus plus. So we have L. Sorry. मेरे ना एक्चुअली आज थोड़ा थ्रॉट में प्रॉब्लम। पानी पी लो, मैम. नहीं, एक्चुअली ना कंटिन्यूअसली क्लासेस होती हैं, क्या करूं बेटा। हाँ, फाई इज बी इंटू ए। ठीक है, तो ए इज डेल्टा ए ना। सो Yes, ma'am. सो माइन, ये आपका क्या कर रही थी मैं, फ्लो ही हट गया। माइनस बी, और ये आपका हो जाएगा एल, है ना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। सो वी कैन चेंज द साइन टू पॉजिटिव बिकॉज डेल्टा इज नेगेटिव। Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज बी एल वी। क्लियर? Yes, ma'am. arbitrary charge consider किया, and this charge is moving with the rod, this charge is moving with the conductor। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है, यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी चार्ज है, एंड दिस चार्ज इज ऑल्सो मूविंग विद द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो वर्क डन है, हाउ डू वी राइट वर्क डन? वी राइट वर्क डन एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। Yes, ma'am. ठीक है, एंड फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी क्रॉस बी। Yes, ma'am. ठीक है, एंड साइन थीटा इज 1 बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, Yes, ma'am. कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, राइट? Yes, ma'am.
and conductor is moving in the plane while magnetic field is perpendicular to the plane. So we can see that velocity and magnetic field are perpendicular, and magnetic force is QV cross B, QVB sine 90 degree. 90 का साइन। अब ये आपका देखो BL भी है ना, यस मैम। एक याद है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम कैसे रिलेट करते थे वर्क डन चार्ज एंड पोटेंशियल को? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय चार्ज, यस मैम। ठीक है, एंड हियर वी हैव EMF induced. In place of potential we have EMF induced. Again we will write work done by charge. Work done is QVBL upon Q. Q cancel. So in this way you will get BLV. ठीक है? यस मैम। So we have a magnetic field and we have a conductor which is placed in this magnetic field. ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब इस कंडक्टर को हम रोटेट कर रहे हैं. We are keeping this end fixed and we are just moving the conductor from this side, from the other end. ठीक है? ओके मैम। Please draw this. डन मैम। ठीक है, तो हमने एक एंड को फिक्स करके दूसरे एंड से रोटेट कर रहे हैं. तो अगर आप यहां से इसको फिक्स कर दिया आपने, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड, दिस एंड इज फिक्स्ड and we are applying force in यस this मैम। direction to rotate it. ठीक है, so let L be the length of the conductor. थोड़ा सा रोटेशनल डायनामिक्स जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, उसको थोड़ा रिवाइंड करो. क्या था उसमें? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसको हम मूव कर रहे हैं. इसमें अगर हम एक पोर्शन कंसिडर करें, यू कैन कंसिडर अ स्मॉल पोर्शन इन दिस बार, यस मैम। ठीक है, एंड इसका जो लेंथ है छोटे से बार का वो हम ले लेते हैं DR है, और ये फिक्स्ड एंड से कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस. ठीक है। हम्म, नहीं समझ नहीं आया? नहीं। ओके ठीक है, वो डिस्टेंस की क्या आ रहा है? हाँ हाँ, जैसे हमने ऐसे लिया आ इसको, क्या कहते? आ गया, जैसे ये बार है, यस मैम। इसकी लेंथ तो L है, ठीक है. इसमें हमने एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया. जब ये रोटेट करेगा तो ये सारे पार्ट्स ही रोटेट करेंगे ना, इसके मूव यस करेंगे. मैम। ठीक है, तो अगर ये यहां से रोटेट करे तो ये सारे पार्ट्स ही मूव कर रहे हैं, राइट? इसको हमने DR ले लिया और इसका जो फिक्स्ड एंड से डिस्टेंस है उसको हमने R ले लिया. ले सकते हैं? ठीक है। ठीक है, यस आप मैम। क्या होगा बताओ, क्या चीज मैम? आप कैसे करेंगे? जो एंगल है वो थीटा होगा हर मतलब उसका हर पॉइंट से। हम्म, हर पॉइंट का जो चेंज मुख्य है हो रहा है. उसका एंगल सेम होगा। हम्म, अच्छा, हाउ डू वी राइट इंड्यूस्ड EMF? वी कैन राइट EMF induced फॉर दिस स्मॉल पोर्शन. यस मैम। अब इस स्मॉल पोर्शन का जो EMF होगा उसको हम स्मॉल इंड्यूस्ड EMF होगा ना, स्मॉल पोर्शन है, यस मैम। EMF भी स्मॉल होगा, राइट? अगर हम DR ले रहे हैं तो जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम क्या लेंगे? DE. ठीक है, ठीक डी. है। तो अब ये जो DE है आपका ये किसके इक्वल होगा? डी. प्लीज। डी एंड L के प्लेस पे दिस टाइम वी विल राइट DR.
Because induced EMF is BLV. This is a general formula. Yes, ma'am. We are keeping B and V fixed. As it is, we are writing. But in place of L, this time we have written this, DR. Because we are considering just a small portion of the conductor, this portion. And because of this small portion, EMF induced is DE. Small EMF will be induced because of small portion DR. Okay? Okay. And how Yes, ma'am. do we relate linear velocity with angular velocity? We just multiply R with omega to get V is equal to R omega, right? This is how we relate V and omega. Yes, ma'am. V is equal to R omega होता है ना? Linear velocity R into angular velocity होता है, right? ठीक है? Yes, ma'am. In place of V, we can write R omega. में डाउट है? नहीं, मैम। ये पक्का पता है ना आपको? V is equal to R omega होता है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? अच्छा, अब क्या होगा? ये आप B को बाहर लिखो, ओमेगा को साइड में करो, और R dr को we can write them together because this is the quantity. This quantity is changing. This physical quantity is not fixed. ठीक है। Why? क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि अगर हमारा dr यहाँ पे है तो R इतना होगा, है ना? अगर डीआर थोड़ा कम होगा तो आर। R भी मतलब अगर हम dr को आगे करेंगे तो R will also change. यस, मैम। ठीक है? तो बेसिकली ये जो R है हमारा, ये 0 to L वेरी कर रहा है. यस, मैम। Can consider our dr here. If we consider dr here at this location, then R is 0. अगर हम इस dr को यहाँ पे यस, मैम। करेंगे तो R L के इक्वल हो जाएगा, यस, मैम। है ना? यहाँ पे R 0 हो जाएगा और यहाँ पे R L हो जाएगा, राइट? तो अगर यस, हम मैम। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है पूरा, net induced EMF is because of this rotating bar. We want to find the induced EMF in the rotating bar. ठीक है? For this, we need to integrate DE. यस, मैम। We can write B omega RDR in place of DE. And what limits should I write? फ्रॉम 0 to L। Very good. 0 to L. B and omega are constant. We can write them outside. In the bracket we have, sorry, in the integration we have RDR. Again, write the limits. अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे इंटीग्रेशन का? Yes. रेज टू द पावर n+1 बाय में n+1 x। Yes, xn plus 1 upon n plus 1. So it's B omega. For this, we can write R, है ना? Square यस, by, मैम। and 2। write the limits now. So this is on, now I'll put the upper limit minus and then lower limit. So we get half B omega L square. यस, मैम। Please write this. And what is this omega? How omega, angular velocity and angular frequency are related? यस, मैम। How ओमेगा। omega and nu. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। um दोनों। ऐसे कैसे चलेगा श्रेया? ओमेगा इज 2 पाई न्यू. अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पता है ना कैसे रिलेटेड होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। वी कैन राइट ओमेगा एज 2 पाई बाय टी आल्सो. ठीक है? ओमेगा इज 2 पाई न्यू, न्यू इज 1 बाय टी. ये रिलेशंस आपके ईएम वेव्स में भी यूज होंगे. ठीक है? तभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के बता रही हूँ.
So if we put omega is equal to 2 pi nu, then what? What will we get? We get E as half B. In place of omega, we can write 2 pi nu L square. 2 cancel. So this is pi B nu B L. omega mu L square. Yes. Easy? Okay. Should I clear the screen? Yes, ma'am. Okay. What if I have, let's consider a situation where we have a magnetic field. And a coil, circular coil is present in the magnetic field. Let the radius of the circular coil be N. And this coil is rotating. Okay. Because of the rotation produced in the coil, magnetic flux will change. Yes, ma'am. Magnetic flux linked with the coil will change and EMF will be induced. Induced. So we can find change in magnetic flux per rotation. Yes, ma'am. ठीक है? कैसे फाइंड करेंगे? Change in magnetic flux is magnetic field. Magnetic field is not changing, right? Only the area. Yes, ma'am. So per rotation, in one rotation, area swept is equal to 2 pi r. pi. Pi r square. ठीक Pi है? r square. ठीक है? Pi L square. So we can find induced EMF. Induced EMF is d phi by dt. So what should I write now? Wow. Right? Yes. Yes, ma'am. और जो इसमें हम पर रोटेशन का निकाल रहे हैं, तो पर रोटेशन का टाइम क्या होता है? We can write in place of dt, we can write t. ठीक है? ठीक है. क्योंकि ये अपने ही जगह पे ही मूव रोटेट कर रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ. और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही प्लेस्ड है, बस ये रोटेट कर रहा है. तो 1/t इज न्यू, तो पाई बी Yes. न्यू एल स्क्वायर. Okay. जी. चलो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करते हैं. अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर. So we have a rod of length 1 meter. ठीक है? It is rotated with a frequency. Length is given. Length is the radius, right? Length is Yes, the ma'am. radius. So we can say that Radius. radius is 1 meter. Radius is given. And it is rotated with a frequency of 50 revolutions per second. With one end hinged at the center. So this end is fixed. And the other end at Yes, the ma'am. circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter. ठीक है? Other end कहाँ पे है? सर्कुलर मेटालिक रिंग का रेडियस जिसका 1 मीटर है उसमें. एक हमारे पास सर्कुलर मेटालिक रिंग है और उसका रेडियस 1 मीटर है उसमें. मतलब इसको थोड़ा सा ना मुझे पहले बाद में ड्रॉ करना चाहिए था. ये आएगा नहीं अब. मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी बेटा, ठीक है? Okay, ma'am. ये 1 मीटर है, ठीक है? ऐसे, और ये वाला एंड इसका फिक्स्ड है. अब क्या कह रहा है ये? About an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring.
तो रिंग के परपेंडिकुलर और उसके सेंटर से पास करके इसको हम रोटेट कर रहे हैं। अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग? वी हैव टू फाइंड ईएमएफ इंड्यूस। अब इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि हमने इसको 1 रोटेशन करवाया है। कहीं पे मेंशन है यस मैम। 1 रोटेशन कंप्लीट किया है? नहीं, नहीं। है ना। तो हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि जैसे सपोज इनिशियली ये पी पे था, और जब हमने इस मेटालिक रॉड को रोटेट किया तो ये यहाँ आ गया क्यू पे, और एरिया जो इसने कवर किया वो है ये, ठीक है। कैन बी कंसिडर दिस सिचुएशन? यस मैम। ये मेटालिक रॉड पहले यहाँ था, इसका ये वाला एंड फिक्स्ड है, और यहां से यहां मूव किया, ठीक है। सो वी कैन राइट ईएमएफ इंड्यूस्ड एज डी फाइव बाई डी टी। एंड व्हाट इज यस फाइव? मैम। फाइव इज बी इंटू ए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू 1 टेस्ला, और वी कैन राइट डी ए बाई डी टी, है ना। एरिया ऑफ द लूप, यस मैम। ये जो ए है ये क्या है? एरिया ऑफ दिस ब्लू। पीओ क्यू। इट्स लाइक अ सेक्टर, सेक्टर जैसा है ना ये। यस मैम। एंड हाउ डू वी फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर? थीटा Finding area of dt triangle and finding area of into pi r square. We have done this formula in mathematics in lower classes, class 10. है ना। Yes ma'am, in class 10. यस, ठीक है। तो फिर b आ जाएगा और d बाई डी टी, और a के प्लेस पे आपने ये वाला एरिया लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? थीटा अपॉन 2 पाई, वी कैन राइट 2 पाई इन प्लेस ऑफ 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। Pi r square. Now simplify this. On simplification, you will get half b r square d theta by dt. ठीक है? And this d theta by dt, theta is the angular displacement, and d theta by dt is the Yes ma'am. angular velocity, है ना? So we can write E Yes as ma'am. half b r square omega, or omega can be written as Half b r 2 pi square. nu, है ना? पाई Yes तो ma'am. कैंसिल हो जाएगा। Now we have pi b nu r square. Now put the values here in this. So E is equal to pi is 22 by 7 into B is 50. ठीक है? Sorry, This is revolution. 1. B is 1. This is 1. E is 2 pi by 7. Pi is 22 by 7. B is 1 and nu is 50 and R is also 1. Now simplify this. 52 is 100, 100 by 7 and 1100 by 7 हो जाएगा ये, नहीं? तो Yes और ma'am. you can write this as 11 into 2. So 52 is 100, 100 into 11 is 1100 by 7 volts. This is 157.1 volt. This is the answer. ठीक है? Yes ma'am.